Good evening, everyone. My today topic is three-phase to single-phase cycloconversion. In this lecture, we will study how to draw output voltage waveform from three-phase to single-phase. This is the circuit diagram for three-phase to single-phase cycloconverter. In previous lectures, we saw that the cycloconversion is the rectification process. Cycloconversion is the rectification process. So, cycloconversion is the process of rectification only. Means, from this waveform, we want this type of waveform. We want this type of waveform only. So, how we will get this type of waveform? We know the rectification formula for three phase is V naught equal to 3 Vm by pi cos alpha. This is the formula for rectification in three phase rectifier. So with the help of this formula, we triggered this thyristor to get the single phase waveform. Okay, so let's start. First, one formula is angle of reduction. Angle of reduction equal to frequency reduce into 120. मीन्स कितने एंगल से हमको रिड्यूस करना है. ओके, एंगल ऑफ रिडक्शन इक्वल टू फ्रीक्वेंसी कितना हमें रिड्यूस करना है, कितने फैक्टर. सपोज हमें 100 इनपुट में 100 हर्ट्ज है तो आउटपुट में उसको 50 हर्ट्ज में कन्वर्ट करना है. ओके, अगर इनपुट में आपका 200 हर्ट्ज है, आउटपुट में हमको 50 हर्ट्ज कन्वर्ट करना है. दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिड्यूस इनटू 120. वी विल सी इन दिस. सपोज I want to reduce this frequency into 1 by 8 times. So angle of reduction will be delta will be 1 by 8 into 120 equal to 15 degree. Okay, equal to 15 degree. So we want this type of waveform. So at starting voltage 0, at middle voltage maximum, at end voltage is 0. Okay, so to found this type of waveform, so we put alpha equal to, suppose alpha equal to 90 degree. If alpha equal to 90, V naught is 0. This is one is 0. Okay, if alpha equal to 0, V naught is maximum. This one again alpha equal to 90, V naught is 0. So we will start from 90 and reduce to 0 and again increase to 90. So we will get this type of waveform. Okay, this one is the phase voltage A, B and C. So this is the triggering. Suppose this one is the triggering. We want to trigger phase A at 90 degree. We want to trigger phase A at 90 degree. So this is 0, from which we can trigger thyristor 1. So this one is 30, this one is 0, 30, 60, 90. So when we trigger this will start conducting. Again triggered B. I triggered this thyristor 1 at 90 degree. Next one we will trigger, because angle of reduction 15 degree, so phase B will trigger at 90 minus 50 degree. So first one is reduction is 90, second one is 75. So this will reduce like this and suddenly increase. Phase C we will trigger at 90 minus 15, 75 minus 15, 60. Next one is 45. It will increase. This one is 30, this one is 45.
next one is 30 from here, this one is 30. Next is 15 degree, 30 minus 15 degree. Will increase, this one is 0, this is 15. Next one is 0, this one is 0. Okay, this one is 0 degree. So पहले 90 डिग्री ट्रिगर करना है फेस ए को, फिर 15 डिग्री माइनस 75 पे फेस बी को, फिर 15 डिग्री माइनस 60 पे फेस सी को, फिर 15 डिग्री माइनस 45 पे फेस सी। एक डिवाइडर आपका 30 डिग्री का है। ओके, सो ट्रिगर यहां से कर सकते हैं क्योंकि आप फेस ए थर्स्टर ए को तब ट्रिगर कर सकते हैं जब वो पॉजिटिव हो, तो थर्स्टर ए यहाँ से पॉजिटिव होगा, थर्स्टर T1 यहाँ से पॉजिटिव होगा फेस ए के लिए। सो ये इसका 0 डिग्री एंगल होगा। ओके, आफ्टर हमको T1 को 90 डिग्री में ट्रिगर करना है तो यहाँ से ट्रिगर करेंगे। दिस वन इज 0, 30, 60 एंड 90। यहाँ ट्रिगर, जैसे यहाँ ट्रिगर करेंगे आउटपुट में वोल्टेज वेवफॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा इनपुट, दिस वन इज इनपुट, दिस वन इज इनपुट एंड ये डार्क स्केच इज आउटपुट। जैसा इनपुट में वैसे आउटपुट मिलने लगेगा। RL लोड है। ओके, तो ये आपका आउटपुट मिलता रहेगा। कब तक मिलता रहेगा? जब आपका सेकंड ट्रिगर नहीं करेंगे। तो जैसे हमने फेस बी को ट्रिगर किया, कब ट्रिगर किया? 75 पे, 75 डिग्री पे ट्रिगर किया, फेस बी मिलना स्टार्ट हो गया। मिलता रहा कब तक? जब मैंने जैसे ही मैंने फेस सी को ट्रिगर किया, फेस सी मिलना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने फेस ए को, फिर फेस बी को, फिर फेस सी को 45, 30, 15 एंड 0 डिग्री। ओके, अब क्या करना है? अब हमें फिर से 0 डिग्री के बाद फिर से इंक्रीज करना है। यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगा, अब फिर से इंक्रीज करना 15 डिग्री से। तो ये 0 डिग्री ट्रिगर करना, 0 डिग्री में ट्रिगर कर दिया, करते रहे। आउटपुट कब तक मिलता है? कब तक मिलता है? जब तक नेक्स्ट ट्रिगर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम कब ट्रिगर करेंगे? 15 डिग्री पे। दिस वन इज 15 डिग्री, 0, 15, मिडिल वन इज 15 डिग्री। अगेन इंक्रीज 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 इंक्रीज, कब तक इंक्रीज करेंगे? नेक्स्ट वन हमको कब ट्रिगर करना है? 30 डिग्री पे। दिस वन इज 30, इंक्रीज 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 करते करते 30 डिग्री पे। ओके, ये 30 डिग्री ट्रिगर कर दिया। अब ये इंक्रीज होता रहेगा। नेक्स्ट कब तक जाएगा? 45 डिग्री पे। दिस वन इज 45, दिस वन इज 45। इंक्रीज करते रहेंगे कब तक जाएगा? नेक्स्ट वन इज 60 डिग्री, 0, 30 एंड 60 डिग्री। यहाँ पे ट्रिगर करेंगे इसको। ठीक है, तो ये नीचे जाएगा और ये ऊपर आ गया। ठीक है, फिर ये चलता जाएगा। नेक्स्ट वन कितने था ये 15, ये कितना? 30, दिस वन इज 45, दिस वन इज 60। नेक्स्ट वन इज 75, 0, 30, 60, 75। ओके, सो ये नीचे तक जाएगा और ये हो गया इसका 75। नेक्स्ट वन 90, 30, 60, 90। Okay, so you can write it like this. So you get the output voltage 60, 75 and 90 degree. Means you start 90 degree, 75, 60, 45, 30, 15, 0. This one 0. Again 15, 30, 45, 60, 75 and 90. So you get the output waveform like this. At 90 voltage is 0. 90 voltage is 0. Average voltage is 0. Okay, it increasing slowly, increasing. At 0 degree you get maximum. Again 50 degree decreasing and 0. So in this single 3-phase to single phase cycloconverter, you get the waveform only in this form. Okay, only a positive cycle you get, only the positive cycle. So in next circuit diagram we will draw the output voltage equation
for negative cycle also. That means one full cycle. Let's start. This one is circuit diagram for 3-phase to single phase cycloconverter, and in this one is in this form. Okay, this one is positive group and this one is negative group. Okay, so this is look like a dual converter. So in this, for to draw full view, we increase 90 to 0, 0 to again 90, 90 to 180 degree and 180 to 90. This is the decrement and increment angle to get the full view. This one, in previous case we get only from here to here half positive cycle. In this we will get full view, positive cycle as well as negative cycle. Let's see. Let's start to draw. This one is 0 degree. Okay, for 90 degree we will trigger phase A at something here. Okay, and phase B, A at 90 degree, B at, okay, let's start. A at 90 degree, B at 75, next one is 60, next one is 45, next one is 30, next one is 15, next one is 0, again increase 15, again increase 30, again increase 45, again increase 60, again increase 75, again increase 90. Okay, so let's talk. So this is 90, this is 75, this one is 60. So let's draw this. $60. This is 45, 30, 15, 45, 30, 15, 0. Okay, 90 degree, 75, 60, 45, 35, 30, 15 and 0. Trigger at 0. Now again trigger 15, 30, this one is 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90. This one is 90. Now increase angle above 90 degree. Next one is 105 and after that 120 and after that like this we increase. Okay, so this is 90. Next one is 105.
next one is 120, next one is, this is 105, this is 120, this one 135, one 50, something like here, 165, 180. Okay, now increase it 182, means now it decrease from 180 to 90, then 0. Okay, so again next one is 165, 150, 135, 120, so in this next one is 105. So in this type of waveform we get that output voltage is like something that here it is 0 at alpha equal to 90, 0, it is increasing is maximum at 0, now it is decreasing, and at this 90 degree it is 0, and now it's increasing in negative, it is increasing in negative. Okay, and it will 0 at next one is 90, next one is 90. You will get the output waveform like this one. Okay, you will get here like this one, output voltage waveform. So in this 3-phase to single phase you get the output voltage waveform like this. Okay, so here 75 90, again उसके बाद 105, 120, 135, 170, 105, 120, 135, 150, 165, 180. Now decrease 165, 150, 135, 105, 120, 105 and 90. Okay, now this cycle again start from here, 90, 75, 60, 45. So you will get a continuous single phase output voltage waveform. So this is the 3-phase to single phase cycloconverter. Next one is 3-phase to single phase bridge type cycloconverter. This is same as 3-phase to single phase cycloconverter, but difference that this type of cycloconverter have less
harmonics in the output, but it is slightly costly as compared to previous one because it have just double the thyristors. So it has just double the thyristor. Let's see, this one has only 6 thyristor, this one has 12 thyristor. So this type of configuration is used where the harmonics is not important, like heating, and this type of configuration is used where harmonics is the considered factor. So you will get output like this. In both cases you will get output like this, and the triggering is same. Here you trigger 1 thyristor, here you will trigger 2 thyristor at a time for same angle. Okay, so we will not draw the output waveform for this. You can draw it and practice at home. So this is the bridge type 3-phase to single phase cycloconverter. Next one is 3-phase to 3-phase cycloconverter. And one more thing, in this is the non-circulating current type cycloconverter. This circuit diagram is look like a dual converter, 3-phase dual converter. In you study the dual converter, that dual converter are 2 type. One is circulating current type, or other one is non-circulating current type. So cycloconverter is also the rectification process. When you convert frequency one form to another form, means you decrease or increase the frequency. Indirectly you are operating circuit as a rectifier. So in this type of rectifier, if one rectifier is operated at something alpha less than 90 degree, and other one will operate alpha greater than 90 degree. Okay, so if one is operated in rectifier, then other one is operated inverter, so there is a circulating current. Okay, so for non-circulating current type, operate one rectifier at a time or one circuit at a time. And if you want to operate both circuit at same time, then you have to insert a reactor in between them and then operate both. In this waveform, we saw that we operate positive group. Suppose this one is a positive group and this one is for negative group. We operate one as 90 degree and 75, 60 and 45. So it is operated as a rectifier, and after 90 degree it is operated as inverter because voltage is reverse. So when one rectifier or one circuit will operate as rectifier, then other one is operate at inverter. Okay, for next time, if this one is operate as rectifier, then this one is operated inverter. Okay, अगर एक रेक्टिफायर की तरह ऑपरेट हो रहा है, दूसरा आपका इन्वर्टर की तरह ऑपरेट होगा. अगर इस ठीक है, ओके, अगर सर्कुलेटिंग करंट टाइप है तो दोनों ऑपरेट होंगे. अगर सर्कुलेटिंग करंट टाइप नहीं है तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही ऑपरेट होगा. ओके, so same, yeah, this one 3-phase to 3-phase cycloconverter. So in this one is the single group, positive group, negative group, positive group, negative group. ओके, जैसा कि हमने इसमें क्या किया था, एक टाइम पे इसको ऑन कर रहे थे, ठीक है, और दूसरे टाइम पे ये ऑन हो रहा था. ओके, इसमें सिर्फ हमने इसको ऑपरेट किया, कहां से लेके 0 से 180 डिग्री तक, 0 से 180 डिग्री तक सिर्फ इसको ऑपरेट किया. ओके, इसके करस्पॉन्डिंग इसका एंगल हम चेंज करते रहेंगे, क्योंकि यहां पर वोल्टेज वेवफॉर्म नेगेटिव है तो करंट भी नेगेटिव होगा. तो इसमें हम करंट को नेगेटिव नहीं फ्लो करा सकते हैं, तो इसके लिए हमको दूसरा सर्किट एज ए इन्वर्टर ऑपरेट करना पड़ेगा. ओके, सो दिस टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इज ऑलवेज प्रेफर्ड. ओके, सो इन दिस एक टाइम पर जब मैं इसको ऑपरेट कर रहा था तो इस तरह की वेवफॉर्म मिल रही थी हमको, मीन्स एक इस तरह की वेवफॉर्म मिल रही है हमको. ओके, दिस वन. अगर हमको 3-phase to 3-phase साइक्लोकन्वर्टर कन्वर्जन करना है तो नेक्स्ट फेस, दिस वन इज फेस, सपोज दिस वन फेस है, सो सेम प्रोसेस हम इसमें करेंगे. कितना 120 डिग्री शिफ्ट करके, तो दूसरी वाली इधर से स्टार्ट होगी, फिर
तीसरा प्रोसेस सेम तरह से स्टार्ट करेंगे 120 डिग्री अगेन शिफ्ट करके, तो तीसरा ऐसे स्टार्ट होगा। तो आउटपुट में हमको इस तरह से वेवफॉर्म मिल जाएगी। एक इसके लिए इसका स्टार्ट करेंगे, सपोज दिस वन इज फेस ए, ओके, फेस ए, इसका स्टार्ट करेंगे 120 डिग्री बाद, लाइक दिस, ओके। सेम प्रोसेस में भी स्टार्ट करेंगे 120 डिग्री बाद। सो दिस इज द फेस बी एंड फेस सी। This is the 3-phase to 3-phase cycloconverter. 3-phase to 3-phase cycloconverter with reduced frequency. Okay. So 3-phase to 3-phase cycloconverter also have bridge type circuit. Same whatever I explained in 3-phase single cycloconverter, the process and concept is same. 3-phase to 3-phase bridge type cycloconverter is used where the harmonics is important, and 3-phase to 3-phase this type of cycloconverter is used where harmonics are not important. So this one is the 3-phase to 3-phase cycloconverter and 3-phase single phase cycloconverter. Thank you.